that's a quick background about myself. So those of you who are new here. Now today we are going to start with mensuration. Okay, so mensuration हम discuss करेंगे. So let's quickly try and see what mensuration is all about. Okay, so सबसे पहले तो mensuration is basically study of volumes and areas and perimeter and surface area. So basically हमारे पास दो types of figures होंगे. ठीक है, हमारे पास दो types of figures होंगे. We will have some 2D figures, two-dimensional figures. ठीक है, two-dimensional figures के अंदर we will be mainly concerned about two things. We'll be looking for their areas and we will be looking for their perimeters. ठीक है, area क्या होता है? We will look at that in a few minutes. Area हमारे पास कोई भी surface हो. For example, the simplest example could be of a figure like this, a square, let's say, right? Area is the space that it has inside it. So basically, इस figure के अंदर आपके पास ये जो सारा area, this region, all of this region, this is the area of this figure. ठीक है? और perimeter क्या होता है? Perimeter is the length of the boundary of the figure. So perimeter is, you can understand it like this, it's the length of the boundary of that figure. ठीक है, length of the boundary. तो उसकी जो भी boundary होती है उस figure की, उसकी सारी lengths को अगर आप add कर लें, that is the perimeter of that figure. ठीक है, for example, it's a square. इसकी 4 lengths आपको नजर आ रही हैं. This is L. Since all lengths are equal in a square, we've got L, 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 and L here. अब इन सबको add करेंगे, that will be the perimeter of this figure. ठीक है, so 2 dimension के अंदर ये दो चीजें हम consider कर रहे होते हैं. But then we have 3-dimensional figures. इसके अंदर we will see figures like, pyramids, prisms, cylinders, spheres, cubes, cuboids, and we will see what happens to those figures. अब उसके अंदर भी हमारे पास दो चीजें हम वहाँ पे देख रहे होते हैं. One is the volume of a figure. So volume क्या होता है? This is the space inside that figure. For example, अगर आपके पास एक cylinder हो, अगर आपके पास एक cylinder हो like this, it may have a shape like this, something like this. This is how a cylinder may look like. और इसके अंदर आप space कितनी available है, right? So if you were to fill this cylinder, fill this figure with water, let's say, आप कितना पानी इसके अंदर डाल सकते हो? That is the volume of this figure, right? So that's the volume of this figure. एक आपको ये चीज यहाँ पे figure out करनी होगी, volume of figure किस तरह find करते हैं. And the other thing that's relevant in case of 3-dimensional figures is the surface areas. कि surface areas हम किस तरह से evaluate करते हैं in 3-dimensional figures, right? How do you evaluate surface areas? Surface area का भी हम देखेंगे कि वो exactly क्या होता है in a few examples that follow. But right now, how you can understand this is the sum of the areas of all outer faces of the figure. Okay, 3-dimensional figure के अंदर हम perimeter की बात नहीं कर रहे होते. We talk about the surface area. जो आपके पास boundary होती है ना उस shape की, उसका जो outer surface होता है, जो सारे faces होते हैं, उनके areas को अगर आप add कर लो, that is the surface area. ठीक है? But now let's see what different types of 2-dimensional figures and what different types of 3-dimensional figures we need to know of in our syllabus. Okay, so let's go through those one by one. So let's start with this one. So firstly, we talk about 2-dimensional figures. See, पहले 2-dimensional figures की बात करते हैं. So we'll have a list of figures there, and we will, try to understand इनके areas क्या होते हैं, इनके perimeters क्या होते हैं. So we'll quickly go through them. अब ये सारे आपको पता होने चाहिए. There are a few figures in 3 dimensions जिसके उसने आपको exam में areas और volumes दिए होते हैं. But for most of these figures, you need to remember them. ठीक है? अब कुछ तो काफी common है that you may already be aware of as well. For example, square and rectangle. So rectangle क्या होता है? It has 90 degrees. It has 4 sides. एक तो 4 sides हैं और ये सारी sides 90 degrees के होते हैं. ठीक है? ये सारी sides के angles जो बनते हैं, these are all at 90 degrees. So that's important.
अब इसमें एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? जस्ट लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो द एरिया इज जस्ट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. व्हाट अबाउट द पेरीमीटर? The perimeter is the length of the boundary. Boundary में क्या है? Boundary में इसके अंदर चार चीजें आ रही हैं. So there are four lengths here in the boundary of this figure. So there's this L here, this L here on top. So that's 2 times L. That's 2 times L. Plus you've got two B's here, one B here, another B here. अगर उसका perimeter total करोगे, so that's 2L plus 2B, or you can say this is 2 into L plus B. That is the perimeter of a rectangle, right? So that's fairly straightforward. अब rectangle की कुछ properties आपको पता होनी चाहिए. एक important property जो आपको मैंने already बताई, these are 90 degrees, all the angles, ठीक है? और इसके जो diagonals होते हैं, अगर यहाँ पे diagonals draw करें, if you draw a diagonal here, and if you draw a diagonal here, they meet at the midpoints. ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे मीट करते हैं. जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये डायगोनल्स को मिड पॉइंट्स में कट करता है. ठीक है, सो इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट यू शुड नो. ठीक है, मिड पॉइंट्स के दोनों साइड्स, ये सारी लेंथ्स में दे आर इक्वल टू ईच अदर. ये वाली लेंथ सारी. ठीक है, सो दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो. अच्छा, व्हाट अबाउट अ स्क्वायर? स्क्वायर के अंदर अगेन इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल. सो एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है. इसका जो एरिया होगा दैट्स जस्ट a into a, that is a square. और you can say अगर L होती लेंथ तो आप L square कह देते. What about the perimeter? Sum of all the sides, that's 4 times a. Right? So that's fairly straightforward. You know about this. इसकी भी एक property आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. It's the same thing here. The diagonals meet at the midpoint. But there's another thing in addition to that, and that is that the diagonals also make a 90 degrees here. Diagonals यहाँ पे perpendicular भी होते हैं एक दूसरे के. Okay, so that's also important to remember. The diagonals meet at the midpoint and they are also perpendicular to each other. Rectangle में perpendicular नहीं होते, square में होते हैं और rhombus में होते हैं. So this is this property of being of meeting at 90 degrees. It also holds for a rhombus. Rhombus क्या होता है? It's a figure like this. यहाँ पे मैं add कर लेता हूँ. Rhombus is like this. It's a special parallelogram in which all the lengths are equal. इसमें सारी lengths equal होती हैं. Something like this. It's not a square because in 90 degrees angle ही बन रहे हैं इसके vertices के ऊपर. So it's not a square, लेकिन इसकी length सारी equal है. तो इसको हम कहते हैं it's a rhombus. इसका area आप parallelogram के formula से भी निकाल सकते हो. That property is important here. ये जो आपके पास diagonals होते हैं इसके, they meet at 90 degrees with each other. Rhombus के जो diagonals होते हैं, they meet at 90 degrees. Okay, so that's also important to know here. It's a property that is often used in different types of questions. अच्छा, then we have parallelogram. Parallelogram क्या होता है? It's a shape that has opposite sides parallel and equal to each other. जो opposite sides होती हैं, वो एक दूसरे के parallel भी होती हैं और एक दूसरे के equal भी होती हैं. These sides are parallel. ये parallel sides हैं, ये और ये parallel हैं, and they're also equal to each other. How do you find the area of a parallelogram? अब इसको इस तरह से समझ सकते हो. You break it down into two triangles. अब इनको दो triangles में split कर दो. So for instance, you could have one triangle that looks like this. एक ये triangle होगी, ठीक है? So this is one possible triangle. अब एक triangle का area figure out कर लो, उसको 2 से multiply कर दो, ठीक है? So for instance, ये जो नीचे वाली triangle है, let's call this ABC. Triangle ABC का area क्या आएगा? Remember, एक triangle का formula हमारे पास क्या होता था? That's half into base into height. और अच्छा, triangle का area पे भी आ रहा है वैसे in a moment. So half into base into height. That was the area of the triangle, basic triangle. अब height इसमें क्या होती थी? Height was the perpendicular height. So if you're considering this base, if you're considering AB as the base, आप क्या कहते थे? B is the base. Height क्या होगी? H is this perpendicular height, vertical height. ठीक है? Perpendicular. जो आप base ले रहे हो उसके perpendicular height होनी चाहिए. So this was the formula for a triangle, है ना? अब दो triangles हैं इस तरह की, तो आप इसको 2 से multiply कर दोगे. इसको 2 से multiply करोगे तो क्या होगा? This 2 and 2 this can get cancelled out. आपके पास ये आ जाता है base into height. तो area of a parallelogram, you can figure this out using this formula, that is given by base multiplied by height.
इसका क्या मतलब है, आप कोई भी साइड लो पैरेललोग्राम की, एक साइड फॉर एग्जांपल हमने ए बी साइड ले ली, इसके परपेंडिकुलर आप हाइट जो है ये आप देख लो, एरिया विल जस्ट बी बेस इनटू द हाइट, राइट? दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। और अगर आप दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करके करना चाहते हो, दैट्स आल्सो perfectly fine, that should give you the same result as well. Okay, अच्छा, then you have perimeter. Perimeter of a parallelogram, again you've got four sides, उन सारी साइड्स को ऐड कर दें, so you've got the opposite side equal, अगर वो a है तो ये भी a होगी, नीचे वाली b है तो ऊपर वाली भी b होगी, the total perimeter turns out to be 2 into a plus b. ठीक है, that's the perimeter of a parallelogram. और इसमें भी exactly वही property hold करती है, diagonals जो है वो mid point के ऊपर meet करते हैं, so that property holds here as well. They do not necessarily make a 90 degrees, लेकिन ये आपस में, for example, this length is going to be equal to this length, और जो green वाली lengths हैं वो आपस में equal होंगी, और ये mid point के ऊपर meet कर रहे होंगे. So that's a property that you sometimes have to use as well. All right, so that's about rectangle, square, and parallelogram. Okay, let's move on. और हमारे पास क्या होता है? We have some other figure. It's just taking a few seconds to load the next slide. Okay. So while it's loading, can you please just let me know if my voice has been okay until now? कोई lag तो नहीं आया? Sometimes have this issue. So I just want to be sure. Lag तो नहीं आ रहा कोई? Okay, so it's okay. Good, thank you. So it's area of parallelogram. वो repeat करूँ. So basically, Alicia, area of parallelogram में आपको सिर्फ क्या करना है? area of parallelogram के अंदर आपको सिर्फ ये करना है कि जो मैं चार्ट देख रहा था, अच्छा ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी आपके पास बेस होगी, आप किसी भी एक साइड की बेस कंसीडर कर लो, उसके रेफरेंस से जो परपेंडिकुलर हाइट आपके पास आएगी उससे मल्टीप्लाई कर दो. तो दिस इज द बेस, दिस इज द बेस, आप इसको इस 8 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, जिस तरह आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो, आप उसको एक दो ट्रायंगल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर लो. फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह बताया था, एबीसी ट्रायंगल है आपके पास, एबीसी ट्रायंगल के एरिया फिगर आउट कर लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो दैट्स द सेम थिंग, यू कैन आल्सो डू इट दैट वे, दैट्स आल्सो परफेक्टली फाइन. वालेकुम अस्सलाम अहमद. अच्छा, let's look at a few more. So two dimensions के अंदर we have a few more figures like this. It's a triangle जो है, अब यहाँ पे एक दफा मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी एक दफा डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, we have discussed the area of triangle already, but let me just remind you of that again. Area of triangle क्या होता है? एक फॉर्मूला इसका आपके पास होता है, that is half into base into height. So that's half into base into height. That's one formula that you have for the area of a triangle. ठीक है, अब इसमें बेस और हाइट क्या होते हैं? You have to remember, जो भी आप बेस ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप AC को बेस लेते हो, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आपने देखना है तीसरे पॉइंट पे क्या होएगा. That's this H. हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होगी. अगर आपको परपेंडिकुलर हाइट नहीं पता और उसकी बजाय लेट्स से आपको कोई एंगल पता है, फॉर एग्जांपल इफ यू नो दिस एंगल हियर, लेट्स से दिस एंगल हियर, ये आपको ये वाला एंगल पता है, दिस इज थीटा. तो एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज हाफ इनटू AB sin ऑफ C. इसी को आप लोगों में से कुछ ने इस तरह भी किया होगा. You might have said this is half into x into y into sine of theta. The idea is you take any two sides of the triangle. कोई भी दो साइड्स ले लें ट्रायंगल की. यहाँ पे हमको कह रहे हैं A और B. जो भी आपने साइड्स ली हैं उनके दरमियान वाला एंगल, वो यहाँ पे आएगा थीटा या C. Any two sides
and the angle between them. This is very important. It's not just any angle. दो sides जो आप ले रहे हो उनके दरमियान वाला जो angle होगा उससे उसका आप sin जो है उससे multiply कर रहे हो. ठीक है? So for instance यहाँ पे अगर हमारे पास होता, we had a triangle like this for instance, something like this. We may know that this is 4, this is 7, and this is 10. हमें तीन sides पता है. Let's say this is 10, this is so this is 7, 10, and 4. So you got something like this. ये triangle है हमारे पास, and we know this angle here. This angle is let's say 30 degrees. अब हमें area figure out करना है इस triangle का. What will we do? हमें angle कौन सा पता है? This 30 degrees. ठीक है? 30 degrees के साथ कौन सी side लग रही है? एक 4 लग रहा है, एक 10 लग रहा है. 4 और 10 के दरमियान वाला angle is 30 degrees. We will say half into 4 into 10 into the angle between them, that is 30 degrees, into sine of 30. तो जो आप sides use करते हो उनके दरमियान वाला जो angle है, that is what you consider here. So that's how you apply this formula. This is what you need to know for the area of a triangle. Okay. Walaikum assalam, Rafi. So I hope that's clear. So this is how you find the area of a triangle. These are the two formulas that you need to know. अब ये दोनों same formulas हैं. That's different ways of writing the same thing. और ऊपर वाला एक दूसरा हमारे पास एक अलग formula. Okay, so this is what you need to know about the area of triangle. What about the perimeter of a triangle? For a perimeter, you just add all of the lengths. जो भी उसकी boundaries हैं उनको add कर देंगे. So that's A plus B plus C. Wherever are the three lengths of the triangle, उनको आप add कर दोगे. That will be the perimeter. Okay. अच्छा. Next is trapezium. Trapezium क्या होता है? Trapezium के अंदर दो sides parallel होती हैं. Two sides are parallel. For example, in this case, you've got A and B that are parallel to each other. जो बाकी दो sides है वो parallel नहीं होती. ठीक है? दो sides parallel होती हैं और बाकी दोनों sides parallel नहीं होती. ठीक है? अगर बाकी दोनों sides से parallel हो उसका मतलब है वो तो parallelogram बन जाएगा. Trapezium is जब दो sides parallel हो, दो opposite sides और बाकी दोनों sides parallel नहीं. अब इसका एरिया कैसे होता है? It's half into the height. Height क्या है? Height in this case is the distance between the parallel sides. It's the perpendicular distance. Perpendicular distance between the parallel sides. Perpendicular distance between the parallel sides. आपको ये नजर आ रहा है? This is the h. This is the height. ठीक है? Multiplied by a plus b. A और b क्या है? These are the parallel sides. एक side a है, दूसरी side b है, तो उनकी sides को आपने add कर दो. You can say it's half into sum of parallel sides. So this is basically this thing here is the sum of parallel sides. ठीक है? This is the sum of parallel sides. और फिर उन parallel sides के दरमियान में जो height है, जो distance है, उसको आप h कह दोगे और 1/2 से multiply कर दो. ठीक है? So that is the area of a trapezium. Area of trapezium आप इस तरह से figure out करते हो. और इसका भी perimeter, that's again, that's the sum of all sides. जो भी आपके पास lengths है, जो भी आपके पास सारी lengths हैं, उनको add कर देंगे, and that will be the perimeter. So let's say this was A, B, the other was let's say C and D. You just add all of them up. So that's you'll have to find the lengths और उनको add कर देंगे. ठीक है? A, B, C, D उन सबको add कर दिया. That's the perimeter. All right. अच्छा, ये हमारे पास हो गई कुछ common 2D figures. इसके बाद we also have the circle और उसके अंदर जो sectors होते हैं, we also need to know about them. So let's think about those figures here. So circle का area क्या होता है? ये तो हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं. This is pi r square, right? Pi into r का square. Perimeter, जिसको हम circle के case के अंदर we also call this the circumference. इसको हम कहते हैं circumference, है ना? हम circumference पे कहते हैं that's this total arc length. ये जो आपके पास पूरा ये boundary आ रही है, that is the circumference. इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? That is 2 into pi into r, and that's the circumference. That's something that we know about.
व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल? सेमी सर्कल के केस के अंदर हम इसको सिर्फ 2 से डिवाइड कर देंगे। एरिया हमारे पास ये था टोटल सर्कल का, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वी गेट द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। What about the perimeter of a semicircle? So I would want to hear from you about this. Perimeter of a semicircle. How do you figure this out? Perimeter of a semicircle. ये कैसे आएगा? Perimeter of a semicircle. Pi r into the diameter. Pi r into the diameter. Pi r. So Alicia is saying pi r. अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास सर्कल का पेरीमीटर क्या था? 2 pi r. Okay. What about the semicircle? Semicircle में हमें क्या कर देना चाहिए? इसको 2 से डिवाइड कर देना चाहिए. That's 2 pi r divided by 2 and that gives us pi r. अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया pi r. ऊपर वाले को 2 से डिवाइड कर दिया. But is that it? Remember हम किस तरह से डिफाइन किया था हमने पेरीमीटर को? हमने कहा पेरीमीटर is the length of the boundary. अब इसकी लेंथ देखें आपके पास क्या है? Length of the boundary. Boundary में क्या क्या चीजें आ रही हैं? Boundary में we've got 2 things. One is this arc. ये arc तो हमारे पास आ जाएगी. Yes, very good. So arc तो हमारे पास आ जाएगी 2 pi r को 2 से डिवाइड करने पे, right? Because वो पूरी arc length जो है वो 2 pi r थी, उसको 2 से डिवाइड किया, we got I into r. There is another thing here and that is this diameter. ये जो diameter आपका नीचे आ रहा है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे. So diameter is another way to write that is 2 multiplied by r. So we say plus 2 multiplied by r. So I think Laiba you meant pi r plus the diameter, not multiplied by the diameter. So it's pi r plus the diameter or plus 2r. So that is the perimeter of a semicircle like this. Okay? Remember हमें करना क्या होता है? Boundary की length find करनी है. So arc length आपके पास आ गई pi r से, ये 2r आपकी length. What about a sector? Sector में हम क्या करें? We have a sector like this. What about the area of a sector? Now, sector is part of a circle. It's some part of a circle. ठीक है? अब आपका circle जो है, उसका area कितना है? That is pi r square. Circle का area is pi r square. ये कितना है? This is some part of that circle. कितना part है? ये theta degrees इसमें angle बन रहा है. Circle का angle कितना होता है? Circle का angle होता है 360. अगर आप रेशियो से लगाओ, it's basically theta over 360 multiplied by pi r square. That is what you get here. ठीक है? कि total angle जो हमारे पास एक सर्कल में होता है, that is 360. सेक्टर में कितना है? That is just theta. So रेशियो से हम उसकी हमने pi r square की, हमने देख लिया कितनी रेशियो बनती है सेक्टर के अंदर. So that's the area formula for sector. Theta over 360, whatever that angle is, उसको 360 से डिवाइड करेंगे. Multiplied by the area of circle, that is pi r square. Okay. What about the perimeter of the sector? इसमें एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं, एक चीज हमें होती है, that's called the arc length. ये जो हमारे पास arc है ना, इसकी length कितनी होगी? Remember circle में arc length कितनी होती है? 2 pi r. यहाँ पे लिख लेते हैं arc length. Circle में arc length कितनी होती है? पूरे circle के अंदर it's 2 pi r. तो एक sector में कितनी होगी? Sector के लिए we just multiply that by theta over 360 ताकि हमारे पास वो रेशियो आ जाए कि वो कितनी हमारे पास इस सेक्टर के अंदर बन रही है. That is going to be theta over 360. So 360 theta over 360 into 2 pi r, ये हमारे पास होती है arc length. ये curved length है, इसकी length is theta over 360 multiplied by 2 pi r. Now what about the perimeter of the sector? इस सेक्टर का perimeter कैसे figure out करें? What about the perimeter of the sector? ये कैसे figure out करें? हमारे पास arc length का formula तो आ गया. That's theta over 360 into 2 pi r. What about the perimeter of the sector? So again, remember perimeter is the length of the boundary. Length of the boundary. तो boundary में क्या क्या आ रहा है इसके अंदर? Any ideas? Boundary के अंदर क्या क्या आ रहा है इसमें? Sector की boundary में. Plus 2r again, right? So perimeter क्या होगा? We have the arc length. Arc length कितनी है? Arc length तो हमारे पास आ गई theta over 360 multiplied by 2 pi r. ये हमारे पास आ गई arc length. That's only this part. ठीक है, ये वाला part. बाकी कितना है? Boundary ये एक r ऊपर भी आ रहा है, एक r नीचे भी आ रहा है. तो
2 times r आपने इसमें ऐड कर देना है, that is going to be the perimeter of this shape. इसका perimeter में क्या होएगा, arc length, that's theta over 360 into 2 pi r plus 2 times the radius, that is the perimeter. Is that okay? Walaikum assalam Ammar, I'm good. I hope you're also well. So that's the perimeter of a sector like this. Is that clear? Any issues? Walaikum assalam Mama. Any problems with this? Any questions? No? Okay, good. Very good. So let me just remind all of you who are here. We also have another group that we are doing past papers in. So in this group, we are discussing the concepts of all of these main topics. Or in the other group, what we're going to do is, in the other group, we are going to be looking at past paper questions on these topics. ठीक है? दूसरे ग्रुप के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, इन टॉपिक्स के ऊपर past paper questions डिस्कस कर रहे होंगे. और जो भी हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे मंडे को, on Tuesday we are going to be doing practice questions on those topics. और Thursday, Friday, Saturday को we are doing yearly past papers. ठीक है? Thursday, Friday, Saturday को हम yearly past papers करें, and that's how we're going to go about this throughout the next 1.5 months until you have your math exam. So इस ग्रुप में हमारे पास मंडे को क्लासेस होती हैं that only discuss the concepts. On Tuesday and then Thursday, Friday, Saturday, we do past paper questions on these topics and also on other topics. जब हम yearly past papers करते हैं, you can join that group if you are interested. That group's link is here. I'm just going to post that here. ग्रुप का लिंक मैं आपको यहाँ पे चैट में पोस्ट कर देता हूँ. 92502. Yes, that's here. So this is the group link. So anybody who's interested, you can join that other group using this link as well, जहाँ पे हम past paper practice कर रहे होंगे. ठीक है? अच्छा, let's move on. So next we have three-dimensional figures. Three-dimensional figures के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है आएगा figures like this. Okay, now we move to 3 dimensions. 3 dimension का मतलब क्या है? अब हम अगर हम पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये फिगर एक तरह से पेपर से बाहर आ गई. It's 3 dimensions now. So that's how most figures are in real life. So we've got some simple figures first here. We've got a cuboid, we've got a cube, and we've got a cylinder. तो क्यूब और क्यूबॉइड के हमारे पास जो है वो फॉर्मूलास तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. So हमारे पास रिमेंबर हमने कहा था 3D फिगर्स के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी. One is the surface area. Surface area is the sum of the areas of all the faces of that figure. For example, हमारे पास ये क्यूब है. फॉर एग्जाम्पल मैं सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे देखें. क्यूब में क्या हो रहा है? वी हैव 6 साइड्स ऑफ दिस. एक ये साइड है जो राइट साइड पे है, ठीक है. एक वो साइड है जो इसी के ऑपोजिट लेफ्ट पे है. आपके पास नीचे एक साइड है, that's the base, that's this side. एक और टॉप पे एक साइड है, ठीक है. These are 4 sides, and then you have this side on the front. You have another side on the back. There are total 6 faces of this figure. 6 faces के अगर आप एरियाज को ऐड कर दो, that is the surface area of this cube. अब ये क्यूब में क्या होता है? क्यूब के अंदर आपकी सारी लेंथ इक्वल होती हैं. सारी लेंथ इक्वल होती हैं, उसका मतलब ये है कि आपके पास जो फेसेस बन रहे हैं 6, उन सब के एरियाज क्या होंगे? अगर हम एक फेस के एरिया निकालें, दिस फेस हैज एरिया L into L, that is L square. L square आ गया. क्योंकि 6 फेसेस हैं, हमने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, so that's 6 times L square. ठीक है. क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम is just the product of these 3 lengths. Okay, सारी lengths equal हैं, we just say this is L cube. Right, this is just L cube. L को आपने 3 times multiply कर दिया, L into L into L, that's L cube. Okay,
अच्छा, देन वी हैव अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फर्क होता है? क्यूबॉइड के अंदर the lengths are not necessarily equal. Now these are also 6 faces, total 6 faces are यहाँ पे भी, front, back, right, left, and then bottom, top. There are 6 total faces. अब इनका surface area और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? So वॉल्यूम तो वही, आपने क्या करना है, सारी जो लेंथ्स है उनको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में. There are 3 different lengths. We've got length here, we've got a breadth here, and we've got a height here, and ऊपर vertical height, that is h. इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, that is the volume of that shape. अच्छा, अब इसके साथ what about the surface area? Surface area कैसे figure out करें इसका? Surface area, again, it's the sum of the areas of all faces. Sum of the areas of all faces. जितने भी आपके faces हैं, उन सब के areas को add कर देंगे. ठीक है? अब देखिए, एक front पे face है, that's b into h. ये b है, ये h है, ये front वाला face का area कितना होएगा? bh. ये हमारे पास आ गया bh. ठीक है? अभी इसी के opposite आपकी एक side है, एक face है, that has the same dimensions. Opposite faces, they are equal. They have equal areas here. हमने क्या किया, उस वजह से बाहर ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया उसी को. इसी तरह से we got one face here, that's at the bottom. This is also a rectangle. इसकी क्या लेंथ है? L and B. So we've got LB here. और क्योंकि नीचे वाला face और ये ऊपर वाला face, they both have the same areas. उसकी वजह से हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया. ठीक है? So we also have this LB multiplied by 2. And finally we got this face, right side पे आ रहा है. ठीक है? ये वाला face है एक. इसके क्या dimensions है? L and H. The area of this is going to be given by L into H. क्योंकि इसी के equal आपके पास एक opposite face भी है. That's this. You also multiply this by 2. तो ये 2 से सारे multiply हो रहे हैं. That's why you have this in bracket here. So you got the areas of the 6 faces. तो आपने essentially करना क्या, जितने भी उसके outer faces हैं, उनके areas calculate करने हैं और उनको sum कर देना, उनको add कर देना. आप इसमें that is going to be the total surface area for that particular figure. Okay? So let's talk about a cylinder. Cylinder में क्या होता है? Cylinder के हमारे पास 3 different चीजें जो हमें पता होनी चाहिए. ठीक है? Cylinder में 3 different चीजें पता होनी चाहिए. अब वो क्या 3 different चीजें हैं? एक तो इसका टोटल सरफेस एरिया, एक इसका कर्व सरफेस एरिया. अभी हमारे पास कुछ शेप्स आएंगे जहां पे ना कर्व सरफेस हुआ करेंगे. सो लेट्स थिंक अबाउट अ शेप लाइक दिस. हमारे पास अगर एक ग्लास है, राइट, इट्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास दैट लुक्स लाइक दिस. ठीक है? सो यू मस्ट हैव सीन दोस ग्लासेस, स्पेशली शादियों पे इस तरह ग्लास होते हैं, स्ट्रेट. कुछ शादियों पे ग्लास होते हैं, केटर्स करते हैं. पहले होते थे एटलीस्ट, नॉट probably not now, but you have classes like this, vertical, इस तरह से बिल्कुल straight glasses, right? अब उसमें क्या है? We have 3 faces for this. अच्छा, ऊपर से ग्लास तो ओपन होता है, but अगर ये क्लोज्ड होता, ऊपर इसकी लिड भी होती, we'll have 3 faces here. एक फेस ऊपर आ गया सबसे टॉप पे, this circle at the top. We have one face at the bottom, that is this circle at the bottom. और एक आपके पास क्या होएगा? This is the curved surface, जहां से आप ग्लास को होल्ड करते हो, जहां से आप ग्लास को पकड़ते हो, that is this curved surface that you have here. एक हमारा ये curved surface होता है. ठीक है? ये 3 faces हमारे पास होते हैं for a cylinder. ठीक है? अब इसका एरियाज किस तरह फिगर आउट करें? इसका जो curved surface area होता है ना, curved surface area, that is given by this 2 pi r into h. 2 pi r into h. So those of you are interested, ये पता है कहां से आता है? ये आता है आपके सर्कल के एरिया, सर्कल का पेरीमीटर होता है ना, आपका सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 pi r, राइट? तो 2 pi r को आप ऊपर एक्सटेंड कर दो विद अ सर्टेन हाइट, लेट्स से h, तो जो सारे सरफेस एरिया आपका बनता है that becomes 2 pi r multiplied by h. That's where this formula comes from. 2 pi r into h. हम प्रिज्म में भी देखेंगे. It's a special kind of a prism. ये जो सिलेंडर होता है, it's a special kind of a prism, जिसमें आपका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, that comes from this basically. जो पेरीमीटर है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो हाइट के साथ.
Acha, Shazia is saying she cannot see the figure. Is that the case for all of you? Can you not see what I'm writing or drawing there? आपको screen नहीं नजर आ रही? Can somebody please confirm if you can see the screen and also what I'm writing or drawing there? Yes, no? I have responses. Okay, Shazia, you might want to refresh once. एक दफा refresh करके देखें, and that should work. Or I would recommend that you use your phone for this. अक्सर ना कि जो web app है उसमें कभी-कभी कोई मसला होता है. So if you use it on your phone के आप app में देखोगे तो that generally works better a lot of times. Okay. So basically इसका जो curved surface area होता है ना, that's given by this 2 pi r into h. 2 pi r into h. Okay, that's the curved surface area, 2 pi r into h. That's this green area that I've drawn here. ठीक है, ये आपका होता है curved surface area. अगर आपको total surface area चाहिए और ये अगर एक closed cylinder है, closed cylinder का क्या मतलब है, दोनों sides पे ये बंद है, तो आपके पास दो circles भी आ रहे हैं उसकी वजह से. एक तो आपका हो गया curved surface, that is 2 pi r h. Curved surface area आपका हो गया 2 pi r h. अगर अब यहाँ पे क्या है कि ये सिलेंडर दोनों साइड से क्लोज्ड है, तो आपके पास एक ऊपर सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, एक नीचे एक सर्कल है, दो सर्कल्स भी आपके पास आ रहे हैं. तो व्हाट यू डू इज यू ऐड द एरियाज ऑफ दोस टू सर्कल्स एज वेल. अब इसमें ऐड कर देते हो pi r square multiplied by 2. This is the total surface area of a cylinder. ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बस उसमें कॉमन ले लिया हुआ है 2 pi r. It's the same thing that we've written here. 2 pi r h, the curved surface area plus the areas of those two circles. अब यहाँ पे you have to be a bit careful sometimes. कभी-कभी आपके पास open cylinder होता है. Open cylinder का क्या मतलब है, इसमें से सिर्फ एक सर्कल होएगा. ठीक है, open cylinder का मतलब ये है कि आपके पास हो सकता है ऊपर वाली lid उसके नहीं है. So it's like a glass which has only one end closed. तो अगर ये open cylinder होगा तो तब क्या होएगा? If it was an open cylinder, तो curved surface area तो उतना ही है जितना पहले था. That is still 2 pi r h. However, there's only one circle now. There are not two circles. ऊपर वाला है तो है ही नहीं. It's an open cylinder. तो ऊपर वाला circle तो exist नहीं करता. So the area here, the surface area here is going to be 2 pi r h plus pi r square. ये आपके पास होगा इस केस के अंदर curved surface area plus the area of only one circle. That's pi r square. ठीक है? So that's how you find the surface area for a cylinder. दोनों cases के अंदर different होता है. If it's an open cylinder, you add 2 pi r square. If it's an open cylinder, you add 1 pi r square, single pi r square. If it's a closed cylinder, you add 2 pi r square. So that's the area. इसी तरह इसका volume क्या होता है? Volume is given by this pi r square h. वो भी basically कहाँ से आ रहा होता है? You have pi r square as the area of the base. ये आपका base का area होता है ना? और h आपकी height. Base के area को आप height से multiply कर देते हो, you get the area of the cylinder. Because this is a special type of a prism. तो अब इसको हम generalize करते हैं अब आगे. Volume of cylinder हमारे पास क्या होता है? It's pi r square h. ये भी आपको याद होना चाहिए. ठीक है, ये आपको given नहीं होता. You have to remember this. अब ये cylinder जो है ना, it's a special kind of a general shape. और वो general shape क्या है? That's this thing that's called a prism. हमारे पास एक shape होती है that's called a prism. Cylinder भी इसी की एक special type है. So let's see what this shape is. So there could be different kinds of prisms. Right now, just look at the one that you see on the left side here. Left side here. So you might have seen Toblerone. Toblerone, how does that look? It looks something like this, that you have sort of a triangle. Like a Toblerone, at least from the outside, under those there were different chunks होते हैं, but if you look at the packaging of that, it looks like this. You've got a triangle. What's a triangle होती है?
we've got a triangle like this, ठीक है, और फिर क्या है, वो ट्राइंगल एक तरह से रिपीट हो रही होती है थ्रू आउट द फिगर. दिस इज अ प्रिज्म, दिस इज अ प्रिज्म, राइट, दिस इज अ प्रिज्म. अब यहाँ पे क्या है, देयर इज अ ट्राइंगल हियर जो एक तरह से रिपीट हो रही है. There's a triangle here that is being repeated throughout the figure. Triangle देखें, बहुत सारी triangles यहाँ पे आपके पास आ रही हैं. That figure is being repeated. इस तरह की figure है जहाँ पे एक shape, अगर 2 dimension में कोई shape, for example triangle है, वो repeat हुई जा रही है, आपने एक तरह से stack कर लिए बहुत सारी triangles. This is called a prism. अब ये triangle, इसको हम कहते हैं triangular prism, right? इसकी जो repeating figure है, इसकी जो रिपीटिंग फिगर है, दैट इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल बहुत दफा रिपीट हो रहा है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड अ प्रिज्म. अब प्रिज्म का हम वॉल्यूम कैसे फिगर आउट करते हैं? इट्स द बेस एरिया. इसको बेस एरिया भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगेन, दिस इज द शेप दैट इज बीइंग रिपीटेड. अब देखें, यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के थ्रू आप देखें पूरी फिगर के अंदर ट्रायंगल ही ट्रायंगल्स हैं एक तरह से. तो दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस. दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस. दो जो आपके पास दोनों एंड्स के ऊपर सेम शेप होती है, दैट इज द क्रॉस सेक्शन. उसका एरिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे. एंड देन द हाइट. हाइट क्या है? हाइट इज दिस डिस्टेंस बिटवीन those shapes at the two ends. आपके पास दो triangles दोनों ends के ऊपर आ रही है ना, दोनों ends के ऊपर you've got those two triangles. इसको आप कहोगे this is your height. वो डिपेंड करता है आपकी फिगर किस तरह से पड़ी हुई है. अगर इस तरह से बेस में पड़ी हो, इसको आप लेंथ भी कह सकते हो. अगर वो खड़ी हुई है फिगर, you know, something like this, if it's like this, you know, then you can call this height. But essentially वो है क्या? This figure is basically this length is basically the distance between that same figure on both ends. दोनों साइड पे ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, वो दोनों सेम शेप्स जो हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये उसको हम कहते हैं हाइट. दिस इज द हाइट. अगर आप पीछे देखें, सिलेंडर में भी एग्जैक्टली यही हो रहा था. सिलेंडर में क्या था, हम सिलेंडर को कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ अ सर्कुलर प्रिज्म. कि सर्कल हमारी बेस है, दिस इज द बेस, सर्कल, और फिर वो सर्कल रिपीट हो रहा है पूरी फिगर के अंदर. सो that becomes a cylinder. तो बेस एरिया क्या होता है? यहाँ पे बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, that becomes pi r square h. That's where this formula also comes from. Cylinder pi r square h, base area multiplied by height, that is the volume of this figure. ठीक है, वो आपको यहाँ से मिलता है. Is this clear? Any questions on this? ये प्रिज्म का वॉल्यूम क्लियर है? प्रिज्म का वॉल्यूम बहुत commonly आता है. So if you have any questions on this, let me know. Any problems with this? Is this clear? Okay, good. So that is the volume of this figure. अच्छा, वॉल्यूम अब इसी तरह से आप देखें, प्रिज्म्स की और भी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द बेस, उसके नाम है. तो अगर बेस आपकी ट्रायंगल है लाइक दिस, दैट्स कॉल्ड अ ट्रायंगुलर प्रिज्म. अगर आपकी बेस जो है वो रेक्टेंगल है, इट्स अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म. जो आपको नजर आ रहा है, इट्स आल्सो क्यूबॉइड. ट्यूब, प्रिज्म की स्पेशल टाइप्स हैं सारी. क्यूब, क्यूबॉइड, prism. These are cube, cuboid, cylinder. These are all special kinds of prisms. इनके areas इस तरह से आते हैं, volume भी इसी तरह से आते हैं. ये आपके pentagonal prism है. क्या मतलब कि आपकी base जो है वो pentagon है और वो pentagon repeat हो रहा है throughout the figure. दोनों sides आप ये देख सकते हो, दोनों ends के ऊपर same चीज है. दोनों ends पे you've got the same figure. So that's the prism. So these could be different, kinds of prisms that you see in the figure. Volume हम इस तरह से calculate करते हैं, base area multiplied by height. What about the surface area? Surface area में हम देखें क्या करेंगे. I would draw that figure here again. Surface area के लिए we break it down into two parts. एक हम कहते हैं we are looking at
So how many faces do we have? There are 5 faces here in this particular figure. इसको आसान एक तरीका इसको करने का क्या होता है? You look at the bases separately. दोनों sides के ऊपर जो cross section है उसको आप अलग से ले लो. So this is the triangle. So whatever your base is, आप area of base का find कर लो. So area of base कह लो, area of cross section कह लो, उसको कुछ भी कह सकते हो. अभी क्योंकि 2 हैं, एक साइड के ऊपर है, एक दूसरी साइड के ऊपर है, you multiply that by 2. इसको तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ. एक चीज आपने ये कंसीडर करनी, ठीक है? एरिया ऑफ द बेसिस उनको आपने एक साइड पे कैलकुलेट कर लोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, दैट विल बी द एरिया ऑफ द बेस. अब बाकी क्या रह गया? यू गॉट 3 मोर फेसेस हियर. अगर आप यहाँ पे देखें, ऊपर वाले फिगर के अंदर एक साइड वाला फेस है, राइट साइड वाला, दिस वन, देयर इज अनदर फेस हियर ऑन द लेफ्ट, और फिर एक उसके नीचे जो आ रहा है, येलो में जो आपको नजर आ रहा है, दैट्स द बेस. 3 इसके फेसेस और हैं. हाउ डू यू फाइंड दोज एरियाज? अब उनको अलग अलग से भी फिगर आउट कर सकते हैं एज रेक्टेंगल्स. अ क्विक वे ऑफ डूइंग दैट इज, ये जो बेस है आपकी ना, इसका पेरीमीटर फिगर आउट करना. पेरीमीटर ऑफ द बेस, जो भी आपकी बेस है उसका पेरीमीटर. इफ इट्स अ ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर फॉर एग्जांपल दिस साइड इज A, दिस इज B, दिस इज C. इसकी साइड्स को ऐड कर लें, इसकी लेंथ्स को ऐड कर लें, मल्टीप्लाई दैट. अगर मैं ABCs को इस तरह से कंसीडर करता हूं, आई विल से पेरीमीटर ऑफ द बेस दैट इज A plus B plus C इस फिगर के अंदर, मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट. इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये मुझे बाकी तीनों फेसेस का एरिया टोटल इकट्ठा मिल जाएगा. ठीक है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास होता ट्रायंगल की लेंथ मेरे पास गिवन होती, दिस इज 9, दिस इज 6, दिस इज 7, और मुझे हाइट गिवन होती, दैट वाज 50. ठीक है, दिस वाज 50. नाउ आई कुड फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. ट्रायंगल का एरिया फिगर आउट कर सकते हैं पहले, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो हमारे पास आ गया. बाकी क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी पेरीमीटर ऑफ द बेस, perimeter of that triangle, 9 plus 6 plus 7 multiplied by that 50. This whole thing is going to be your surface area. ठीक है? Does this make sense? Does this make sense? Perimeter of base multiplied by height plus 2 times the base area. That is the surface area of a prism. ठीक है? अब इंशाल्लाह कल in the other group we will also be doing practice questions on this from past papers. Hopefully that will make these things more clear. But any questions on this? Any problems with this? No? Okay. Let's move on to the next one. So we've talked about cylinder, cube, cuboid, and prism. Let's move on to the next figure, to the next set of figures. अच्छा, उसके बाद हमारे पास हैं, so we have cone, we have a sphere, and we have a pyramid. अच्छा, ये तीनों shapes ऐसी हैं जिनके formulas ना आपको दिए भी होंगे पेपर के अंदर. Cone, sphere और pyramid के formulas will be given in your exam. ये आपको एग्जाम में दिए होते हैं, उसने सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि these formulas are given in the exam. तो ये आप given होंगे. अब कोन में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? कोन के अंदर you've got the surface area. Surface area भी again इसमें भी वही है, एक इसका curved surface area है, right? एक इसका curved surface area, this area curved surface. और एक फिर नीचे आ गई आपके पास सर्कल है, that is the circle here. वो सर्कल का भी कुछ एरिया होगा. कर्व्ड सरफेस एरिया कहां से आता है? कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास आता है पाई r into l. l क्या है? l is the slant height. l है ये आपकी slant height होती है. कभी कभी आपको l की वैल्यू डायरेक्टली दी होती है, कभी कभी आपको ये फिगर आउट करनी पड़ती है using Pythagoras. So if you have the radius and you have the height of the cone, that's the perpendicular height of the cone, you can figure out the slant height using this formula, using Pythagoras. Hypotenuse is equal to base square plus perpendicular square, uska square root. You can find that value of L from here.
ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया किससे होता है? पाई आर एल। व्हाट अबाउट द टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया के लिए आप क्या करते हो? कर्व सरफेस एरिया दैट्स पाई आर एल प्लस दिस सर्कल, नीचे सर्कल क्या है? सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सो आप यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल है कि उसने आपसे एग्जैक्टली क्या पूछा है। आर यू बीइंग आस्क्ड अबाउट द total surface area or are you being asked about only the curved surface area? So you have to be careful कि उसने exactly क्या पूछा है आपसे, ठीक है? उसके हिसाब से फिर आप उसको evaluate करोगे। अच्छा, what about the volume of a cone? Again, this is also going to be given. It's 1/3 into pi r square h. Okay, you'll see this similarity there with the area, with the volume of pyramid. Pyramid का formula, का volume का formula, it looks something similar. So 1/3 into the base का area into height, perpendicular height. So corner pyramid के areas भी they look fairly similar there. So volume का क्या formula है? 1/3 into pi r square h. R आपने square करना है, multiply height करना है, 1/3 से multiply करना है. ठीक है? Thank you for confirming. Okay, so let's talk about this now. So next we have a sphere. Sphere का हमारे पास again हमें ये दो चीजें पता होनी चाहिए, surface area and volume. Surface area of a sphere is given by 4 pi r square and the volume is given by 4/3 pi r cube. Again, these formulas will be given in the formula sheet, so we don't necessarily have to remember them. So, but of course, if you have done enough practice, आपको खुद से याद हो भी जाते हैं. So that is the surface area of a sphere. Surface area क्या होता है? बाहर वाला जो curved surface area है उसका वो सारा. ठीक है? Volume is the space inside the sphere. ठीक है? अगर आपने sphere को आप अंदर से किसी चीज से fill करना होता है, कितनी space है उसके अंदर? That is 4/3 pi r cube. अच्छा, इसी की ना एक variation फिर आपके पास आती है जो आपको वो भी पता होनी चाहिए, and that is the hemisphere. अगर आपके पास एक हेमिस्फीयर हो like this, something like this, if you have a hemisphere, that's the half of a sphere. अब बॉल को, किसी बॉल को आप दरम्यान से बिल्कुल कट कर दो, it looks like a hemisphere इस तरह से. What about this shape? इसका वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम तो हम उसी तरह से निकाल सकते हैं. Whatever was the volume of a sphere, उसको हाफ कर देंगे, that will become 2/3 pi r cube. तो हेमिस्फीयर का हमारे पास वॉल्यूम तो उसी तरह आ जाएगा, just by halving the volume, 2/3 pi r cube. Okay? But what about the surface area? Surface area कैसे आएगा? Remember, sphere का surface area कितना था? That was 4 pi r square. तो हेमिस्फीयर का क्या होना चाहिए? At least the curved part, that is 2 pi r square. But is that it? Is that the surface area of a hemisphere? या कुछ और भी करना पड़ेगा इसमें? Is that the total surface area of a hemisphere? Any ideas? Hemisphere का surface area ये क्या होगा? Is this just 2 pi r square, or do we have to do something else here as well? Remember, surface area क्या होता है? It's the sum of areas of all faces. अब इस हेमिस्फीयर के कौन कौन से फेसेस हैं? एक फेस तो इसका ये है, that is the curved part. Curved part ये जो है, ये तो एक फेस है. ठीक है? उसके एरिया हमने देख लिया, that's 2 pi r square. There's also one more face there, and that is this circle at the bottom. हेमिस्फीयर के अंदर ये नीचे वाली साइड पे एक सर्कल भी तो आ गया हमारे पास. We will also need to add the area of that circle. और उस सर्कल का एरिया कितना है? That is pi r square. तो हेमिस्फीयर का जो एरिया, जो सरफेस एरिया बन जाता है, it becomes 3 pi r square. आपका 3 pi r square हो जाता है. कैसे आता है ये? अभी डिपेंड करता है ओपन है या क्लोज्ड है. अगर तो ओपन है हेमिस्फीयर, तो फिर तो ये सिर्फ 2 pi r square होगा. ठीक है? अगर वो ओपन नहीं है, तो आप उसमें ये pi r square इस सर्कल का भी ऐड कर दोगे. ये नीचे वाला सर्कल आ रहा है आपके पास. Is that okay? Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Okay, good. Now, lastly, we have a pyramid. ठीक है? अब pyramid क्या होता है? A lot of students get confused between a pyramid and a prism. Pyramid में ना आपका एक corner बन रहा होता है हमेशा.
you have a point at which all the other points are connected. So ये बाकी सारे points उस point के ऊपर इस तरह से connect हो रहे हैं, है ना? प्रिज्म के अंदर ये नहीं होता था. प्रिज्म के अंदर जो दोनों ends हैं उसके ऊपर same figure होती थी. So if you look at a prism like this, on both ends of the figure आपके पास same shape है. अगर नीचे triangle है तो ऊपर भी देखें exactly triangle, right? अगर नीचे pentagon है तो ऊपर भी आपके पास एग्जैक्टली उसी तरह का सेम पेंटागन है. दोनों साइड्स पे यू हैव द सेम फिगर और इनके दरमियान वाली लेंथ को हम कहते हैं दिस इज द हाइट, और जो सेम फिगर होती है उसको हम कहते हैं दैट इज द बेस, राइट? पिरामिड में ऐसे नहीं होता. पिरामिड के अंदर वी ओनली हैव अ बेस ऑन वन साइड और दूसरी साइड के ऊपर वी हैव अ पॉइंट जिसके साथ बाकी सारे पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं. सो वी हैव अ शेप लाइक दिस, वी हैव अ कॉर्नर हियर. पिरामिड के अंदर वी हैव अ कॉर्नर लाइक दिस. ठीक है? अब ये जो शेप आपको नजर आ रही है दिस इज अ स्क्वायर पिरामिड. स्क्वायर पिरामिड क्यों? इसकी जो बेस है दैट इज अ स्क्वायर. हाउ डू वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड? वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड इज गिवन बाय दिस 1/3 into whatever your base area is. अब वो डिपेंड करेगा आपके एरिया, आपके बेस किस तरह की है. अगर वो स्क्वायर है तो आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दोगे. अगर वो ट्रायंगल है तो आप ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लोगे. सो व्हाटएवर इज द बेस यू फाइंड द एरिया ऑफ दैट multiplied by the perpendicular height. Perpendicular height क्या होगी? The perpendicular coming from that point, जो पिरामिड का वो तीसरा पॉइंट है, to the base. Perpendicular जो वहां से ऊपर से नीचे आएगा बेस तक, ये हाइट जो आपके पास है that is the perpendicular height that we are considering in the formula there. ठीक है? वॉल्यूम आपका इस तरह आता है. What about the surface area? अब surface area में क्या होएगा? एक तो आपकी बेस है जो नीचे है, whatever is the area of the base वो आप वैसे निकाल लोगे, plus area of the shapes that you have on the sides. अभी sides के ऊपर आपके पास हमेशा triangles होंगी. पिरामिड के अंदर sides के ऊपर आपके पास हमेशा triangles होंगी. So जितनी भी triangles हैं उन सब के areas को आपने ऐड कर देना है, उन सब के areas find कर लेने हैं और उनको ऐड कर देना है. That will be the total surface area of the pyramid. ओके, सो ये पिरामिड में आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए. वॉल्यूम इज 1/3 into base area into perpendicular height. बेस कौन सी होगी? जिसके ऑपोजिट आपका ये कॉर्नर आ रहा है, राइट? दैट इज द बेस. लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ pyramids that you're going to have. Different types of pyramids that we are going to have. So we saw a square pyramid there, but there are also other possibilities. You could have, you know, a triangular pyramid. You could have some other kind of pyramid. A triangular pyramid इस तरह भी हो सकता है. For example, ये भी square ही यहाँ पे नजर आ रहा है. But you could also have something like this. For instance, you could have a triangle here that, let's say, looks like this. You have a triangle. ठीक है, this is the base. और आपके पास ऊपर कहीं पे there's a point here. This point से you are connecting all of these points at the bottom of the triangle. So this is a pyramid जहाँ पे आपकी base क्या है? Let's say this is the base. नीचे है, if I were to shade that, this is your base. ठीक है, this is the base. तो base आपकी triangle है. So for that reason, this is called a triangular pyramid. The triangular pyramid भी हो सकता है. You can also have a square pyramid like this, rectangular pyramid, or a square pyramid, or a hexagonal pyramid. Idea is कि जो भी base है उसके opposites, उसके ऊपर जो है कहीं पे एक point है जिससे आपने सारे बाकी points connect किए हुए हैं. जिससे आपने बाकी सारे points connect किए हैं, that becomes the pyramid. ठीक है? और आपने किस तरह से वॉल्यूम फाइंड करना है? जो भी बेस होगी उसका एरिया फाइंड कर लेंगे. सो वी हैड दिस बेस फॉर इंस्टेंस, दैट्स 20 and 10. इट्स अ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20 into 10, क्योंकि रेक्टेंगल है. सो रेक्टेंगल की एरिया इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ दोस लेंथ्स इनटू द हाइट. हाइट आपके पास परपेंडिकुलर हाइट, बेस से उस टॉप पॉइंट तक आपकी हाइट कितनी है? दैट्स दिस 15.8 सेंटीमीटर्स हियर. तो वो आप उस हाइट को देख लें.
उस हाइट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे. परपेंडिकुलर हाइट, रिमेंबर वी टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम द बेस, दैट इज गोइंग टू गिव यू the volume of the pyramid. And again surface area क्या होएगा, जो भी आपका बेस का एरिया है उसमें आप ऐड कर दोगे ट्रायंगल्स के एरियाज को, जो भी आपके पास साइड्स पे ट्रायंगल्स हैं. अभी देखो 4 ट्रायंगल्स हैं, एक ये ट्रायंगल है, एक लेफ्ट पे ये है, फिर थर्ड ये है, फोर्थ ये. यू गॉट 4 ट्रायंगल्स. जस्ट ऐड द एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स to the area of the base and you find the surface area of the pyramid. ठीक है, so that's just a quick overview of all the different formulas and concepts that you need to know for mensuration. आपको इन सब के areas of volumes आने चाहिए और इनकी perimeter surface areas का पता होना चाहिए. And in addition to that, you also need to know of what happens when you combine these shapes. तो अक्सर आपके पास questions के अंदर क्या होता है, इन shapes को combine किया होता है और combine करके you have to figure out कि अच्छा what is their area, what is their volume. वो आपने उनको वहां से figure out करना होता है इनके areas और volumes को. ठीक है, तो वो हम फिर देखेंगे in the next session inshallah tomorrow. That is going to be in the other group. हम उसमें past paper questions practice कर रहे होंगे mensuration के ऊपर. So that's going to be around the same time tomorrow. So आज थोड़ा सा late हो गया, but tomorrow it will be around 4:15